केन्द्रीय विद्यालयः वायुसेनास्थलम् आवडी चेन्नई संभागः भवतां हार्दिकं स्वागतं करोति। संस्कृतशिक्षणे विषयः संस्कृतं, कक्षा षष्ठी। पाठः वृक्षाः। अयं पाठः पद्यपाठः अस्ति। अस्य पाठस्य रचयिता डॉक्टर हर्षदेवमाधवः। मित्राणि, इदानीं वयं पाठस्य वाचनाभ्यासं कुर्मः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखाधोलासीना विहगाः। तैः किमपि पूजन्ति वृक्षाः। शाखाधोलासीना विहगाः। तैः किमपि पूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। फिर से एक बार सभी श्लोकों को एक बार गाने के लिए अभ्यास करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखाधोलासीना विहगाः। तैः किमपि पूजन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। इदानीं प्रथमं श्लोकं पश्यामः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शब्दार्थ देखेंगे। वृक्षाः पेड़, ट्रीज। वने वने प्रत्येक वन में, इन ईच फॉरेस्ट। निवसन्तः रहते हुए, लिविंग। वृक्षाः पेड़, वे, दे, ट्रीज। वनं वनं वन, फॉरेस्ट। रचयन्ति बनाते हैं, मेक। वयम् इदानीम् अस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यामः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। पश्यन्तु, वने वृक्षाः निवसन्ति। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वृक्षाः वनं रचयन्ति। वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हुए वन को बनाते हैं। While residing in each forest,
trees make forest. वयम् इदानीं प्रथमं श्लोकम् आधृत्य प्रश्नोत्तराणि पश्यामः. Let us see some question and answer based on the first shloka. वने के निवसन्ति. इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है के. उत्तरम अस्ति वृक्षाः. वृक्षाः उत्तर है. अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे उत्तर शब्द वृक्षा को लिखेंगे. वने वृक्षाः निवसन्ति. के वनम रचयन्ति. प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, के. उत्तर क्या होता है, वृक्षाः. प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे उत्तर लिखिए, वृक्षाः वनम रचयन्ति. कुत्र निवसन्तः वृक्षाः वनम रचयन्ति. यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कुत्र. उत्तर क्या होता है, वने. इदानीं कुत्र शब्दस्य स्थाने वने इति लिखन्तु. वने निवसन्तः वृक्षाः वनं रचयन्ति. वृक्षाः किं रचयन्ति. प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किम. उत्तर क्या होता है, वनम. अब प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे उत्तर लिखिए, वृक्षाः वनम रचयन्ति. Now let us see the second shloka. शाखाधोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः. We will see the word meaning. शाखाधोलासीनाः. दोला रूपी शाखा पर बैठे हुए, seated on branches as they swing. विहगाः पक्षियां, birds. वृक्षाः पेड़, trees. तैः उन पक्षियों के द्वारा, through those birds. किमपि कुछ भी, something. कूजन्ति कूकते हैं, chirp. Now we will see the meaning of this shloka. वृक्ष के धोला रूपी शाखा पर बैठे हुए पक्षियों के माध्यम से पेड़ कुछ आलाप करते हैं. It looks like the trees chirp something through the birds sitting on branches like swing. Now let us see some question and answers based on the second shloka. The question is, ke shakadolasinaah santi. The questioning word in the question is ke. Now let us find out the answer for the word, questioning word ke. That is vihagaah.
Now we have to replace the questioning word in the question with the answer, that is vihagaha. Now we will get the answer vihagaha shakadolasinaha santi. Here is the question, ke kujanti. Questioning word in the question is ke. Answer for the question is vrikshaha. Now we will replace the questioning word in the question with the answer vrikshaha. The answer is vrikshaha kujanti. Vrikshaha kaihi kimapi kujanti. This is the question. The questioning word in the question is kaihi. Now let us find out the answer for the word kaihi. Taihi. It means vihagaihi. Now we will replace the questioning word in the question with the answer, that is taihi. Now we are getting the answer vrikshaha taihi kimapi kujanti. Now we will move on to third shloka. Pibanti pavanam jalam santatam sadhu jana iva sarve vrikshaha. We will see the word meaning. Vrikshaha, paid, trees. Pavanam, hava, air. Jalam, pani, water. Santatam, lagatar, always. Pibanti, पीते हैं, drink. Vrikshaha, paid, trees. Sadhu janaha, sajjan, good people. Iva, ki tarah, like. वयम् इदानीम् अर्थं पश्यामः. वृक्षाः जलं पिबन्ति, पवनं पिबन्ति, अतः वृक्षाः साधुजनाः इव भवन्ति. ये पेड़ लगातार वायु और पानी का पान करते हैं, अतः ये अच्छे लोगों की तरह हैं. Trees survive on air and water. They are like good people. अब हम तीसरा श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे. पहला प्रश्न, वृक्षाः किम किम पिबन्ति. प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द हैं किम किम. उत्तर क्या हो सकते हैं? पवनम जलम च. अब हम प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्दों को हटाकर उत्तर लिखेंगे. वृक्षाः पवनम जलम च पिबन्ति. दूसरा प्रश्न है कि साधु जनाः इव सन्ति. इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है के. उत्तर क्या हो सकता है? वृक्षाः. अब प्रश्न वाक्य से प्रश्न को प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर उत्तर लिखेंगे. वृक्षाः
साधुजनाः इव सन्ति। तीसरा प्रश्न है के पवनम जलम च संततम पिबन्ति। प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द है के, इसका उत्तर होता है वृक्षाः। अब प्रश्न से प्रश्नवाचक शब्द को हटाते हैं, उत्तर लिखते हैं वृक्षाः पवनम जलम च संततम पिबन्ति। पुनः अयं वेंकटेशः चेन्नईतः भवतां कृते धन्यवादान् व्याहृत्य विरमति। धन्यवादाः।